So I think luck do play a role in Hmm. all the three stages. I will definitely say that because in prelims, as I have mentioned that nowadays prelims is becoming more random. The scope has increased. So sometimes luck plays a role, and in mains also sometimes I mentioned that in my essay, I thought I would get more marks, but I didn't get Hmm. enough marks in essay this time. So I believe that maybe my point of view was not conveyed to the examiner well. Hmm. So maybe that would be a like factor. Hello, everyone. Welcome to the YouTube channel. And today we have with us Yogesh Saini, who secured AIR 323 in Civil Services Exam 2022. So, welcome, Yogesh. How are you feeling about the rank? Thank you, sir, and thank you for having me. And sir, I'm feeling really happy when I saw my name in the PDF. It was an exceptional feeling. I was traveling at that time, Hmm. and when the PDF came in the group, so initially I was shaking while typing my name, but once I saw my name, it was a very exceptional feeling, Hmm. and I called my brother and my mother, and still I can recall that moment. It was a very special moment for me. I think that is something that a lot of people say and understand कि जब like वो पहली बार वो selection होता है ना इतना effort के बाद after so much uncertainty after so much कि भाई मतलब होगा नहीं होगा अच्छा prelims होगा कि नहीं होगा mains होगा कि नहीं होगा interview होगा कि नहीं and then finally you see your name in Yes. that list I can like totally understand it's a great feeling तो क्या कर रहे हैं आप पिछले कुछ दिनों से जब से रिजल्ट आया है सबसे पहले I Sir, think we should also ask did you appear for prelims 2023. So I was saying that, sir, my service preference was like that. My first preference was IAS and second was Mm-hmm. IFS. So in both case, if I got the service, I am not eligible for giving mains because I have to resign for that if I have Yeah. to sit for the mains. So Mm. that was in my mind that my rank was 323. I consulted with many people. So Mm. they said that you might get IFS if not IAS. Mm. So you should there's no point of giving pre in that case. So I skipped, but I saw the paper and the paper was So, very what nice. what were your impressions of the paper this time around? कि, like, obviously, it has become a very fact heavy and memory based paper. What do you think? Sir, I believe that nowadays paper are becoming more random because if we see the questions, they are although they are from the subject area, but the scope of the asking question has increased. I gave my first attempt in 2021. In that paper, also the trend uh, was there. Like they Mm. were asking many different questions. Like they asked from a cricket question also. In Mm. in this year, also they brought many different trends. Like they completely eliminated the elimination technique that we used to use in prelims. So Yeah. that make that you have to know all the three statements if you want to Mm. correct the statement. Previously, we just know one statement and we can eliminate and we can find the answer. Mm. That thing definitely is out of the game, and that has So, brought some more Mhm. competition. So my answer was that, sir, competition with respect to this year mains has dented a bit because there are many deserving candidates who are doing very good in GS paper. Now Mm. they are out because of CSAT paper. Yeah. So in that respect, you are correct that this time the competition may have decreased in Mm. mains. However, the next prelims the competition will increase because Mm. now you have more scope to read and there will Yeah. be more speculations among the candidates. Mm. तो एक ये भी चीज रहती है ना दैट व्हेन पीपल आर प्रिपेयरिंग देयर इज ऑलवेज दैट कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन कि भाई अगले साल यूपीएससी क्या बदलेगा. What do you think about such speculations and are they useful? Because like every year, matlab, ever since I started preparing 2013-14, every year, ever since then, I've been hearing कि optional तो अगले साल हट जाएगा. तो मतलब should people pay attention to these kinds of rumors and या मतलब क्या मतलब है इन चीजों का? So I believe that we should not give much heed to many speculations and rumors because Hmm. we don't know the credibility of these rumors and speculation. So it is like a waste of time. Rather, we should give more focus on what we have Hmm. in syllabus or what we can do in our head. So that is more
better use of time. So I think I should recommend the candidates that they should not give much focus, much time to these rumors, and they just should stick what UPSC is asking and try to find some trend. Like if I have to give example, in environment they always give focus on the environmental laws. Every time there is some laws in prelims. Yeah. So I think if you can figure it out that thing, that will help. Not just speculating that what they will ask from random area. So I think that is one of the core understandings that a lot of people who clear the exam have, and that is something that we also try and foster in all the people that are with us. कि हाँ पूछेंगे भाई रैंडम सवाल एंशिएंट मेडिवल से, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू आल्सो प्रिडिक्ट कि भैया क्या रैंडम पूछेंगे वहां से. बट इन पॉलिटी, मतलब इवन दो इन पॉलिटी इस बार के अगर आपने क्वेश्चन देखे तो देयर वाज दैट वन क्वेश्चन व्हिच वाज लाइक जस्ट वेरी वेरी वियर्ड. उसमें सवाल में क्या पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए फ्रॉम केरला वर्सेस द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ अ एमएलए फ्रॉम एमपी. तो मतलब उसका क्या पॉइंट था मुझे नहीं पता, बिकॉज यू नीड वेरी वेरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. Yes, एंड yes, sir. और ऑप्शन उसमें है वन स्टेटमेंट ओनली, टू स्टेटमेंट ओनली, थ्री स्टेटमेंट ओनली. That मैं is यार very ये true. कैसा सवाल है? मतलब क्या Yes. इंडिकेशन दे रहे हो, क्या चाहते हो तुम मेरे से कि मैं सब कुछ रट के जाऊं? But anyhow, what I Sir, wanted to ask you in this regard was कि if you had to prepare for prelims 2023 and like so forth in yes, sir. 2024, how would you vary your preparation? Yes, What yes. would you do in order to ensure कि you get selected for mains? Sir, I have given two prelims Mhm. in my 2021 and 2022. In both the prelims, I scored 110. Okay. So, which is a very high above the cutoff. So, my strategy for prelims was that I used to give a lot of tests Mm. of diversified coaching institutes, Mm-hmm. and that used to give me a holistic preparation with respect to current affairs, the nature of questions coming, Mm. and not just giving the test. I used to analyze the test. Like I got 20 new questions in one test, so I Mm. will make notes of that 20 new questions in a separate document, Mm. and I will keep updated that document with new test I gave. Mm. So that prepared me with lot of tests, lot of new questions Mm. from that document, and that increased my knowledge base. Mm. And also I developed a technique while solving the paper that I could figure it out that by reading the statement. Like Mm. some statements are like which can be seen wrong just by reading it. So Mm. that kind of technique only come when you are given a lot of paper. Like Mm. in my first attempt I almost give 100 papers of prelims, including Mm. CSAT and GS. In Okay. my second attempt I gave 40 45. So I gave a lot of test papers, and that Mm. helped me to get 20 plus marks from the cutoff. So that really helped me. And I if think. I have to give the next prelims, Mm-hmm. then I would have the same strategy that I will give more tests. I will analyze it. I will Mm. just see the trend what the UPSC is asking, because UPSC is wanting that we should have a holistic perspective of any topic. Now we Mm. cannot have a superficially only knowing one statement and we can eliminate it. Now Mm. we should know all the three statements, so we should go much deeper in our Mm. understanding. So, like, first and foremost, if you do have these notes in a digital format, I would really like if you can share them so that we can, Okay, put sir. them in the video ka description and anybody who wants to refer to them can check them out. Ideally, Okay, I sir. would also like if you can do it on your own domain, मतलब yogeshsaini.co.in. So that will be linked in the video ka description and people who can refer to that. एंड Okay, sir. योगेश, इसमें अब ये वाली एक चीज रहती है, जैसे लाइक यू सेइंग कि टेस्ट तो आप दे ही रहे हो बहुत सारे, बट यू आर ऑल्सो एनालाइजिंग द टेस्ट्स वेरी वेल. तो हाउ डू यू Yes. एनालाइज अ टेस्ट? व्हाट डू यू डू व्हेन यू एनालाइज अ टेस्ट? सर मैं एनालाइज ऐसे करता था जैसे कि मैंने मान लो कि 25-30 क्वेश्चन गलत करे एक टेस्ट पेपर में, तो मैं ये सोचता था कि मैंने ऐसे गलत क्यों करे, या तो मेरे डिवीजन के अंदर फॉल्ट है। मान लो कि एक क्वेश्चन है जिसमें मैं रिवाइज ढंग से नहीं किया तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। दूसरा हो सकता है कि मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ को लेकर। मान लो कोई इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो मैंने गलत कर दिया वो क्वेश्चन। या फिर तीसरा हो सकता है मैंने कोई सिली मिस्टेक करी कि इनकरेक्ट था करेक्ट था वो मैंने गलत मार्क कर दिया। ऐसे ही मैं एक हर हर क्वेश्चन को ऐसे सोचता था कि मैंने क्यों गलत किया, ये क्या रीजन था इसके पीछे। और जब मैं अगला टेस्ट जब मैं लगाता था तब ये ध्यान रखता था कि ये गलतियां ना हो। अगर मान लो मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो मैं उसको पढ़ता था कि उसके बारे में और डीप में नॉलेज पढ़ता था कि अच्छा ये क्या चीज़ है, इसके अलग अलग
जो प्रोविजंस है क्या नहीं है। हम्म, तो ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं करता चला गया, तो कहीं ना कहीं मेरे जो एक्यूरेसी थी वो काफ़ी हम्म, इम्प्रूव हो गई। अगर मैं बताऊं कि मेरे जो मैंने अटेम्प्ट दिया 2022 वाला, इसमें मैंने सिर्फ 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि ओके, मतलब मेरे पैरामीटर से काफ़ी कम है, क्योंकि मैं हमेशा 85 अबव कोशिश करता हूँ। बट मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो गई थी कि मेरे उसके बाद भी 110 नंबर आए। तो बस यही कहूँगा कि ऐसे एनालाइज करें कि मैंने गलती क्यों करी, क्या उसका रीज़न था, उसके ऊपर इम्प्रूव करते चले जाएं हर टेस्ट के साथ। तो अब जैसे लाइक इसके बाद एक बहुत ही कॉमन फॉलो अप क्वेश्चन जो आता है, बिकॉज आई कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि भाई एनालाइज क्या करे कैसे करे, कि ये तो रिकग्नाइज कर लिया कि भाई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, या भैया फैक्चुअल एरर हो गया, या इस टाइप की चीजें। बट अ लॉट ऑफ पीपल से कि भाई रिवीजन कर लिया, 3 4 बार पढ़ लिया, सब हो गया, बट लाइक अभी भी एकदम से मतलब पेपर देख के ब्लैंक हो जाते हैं। मतलब वो एक जो एग्जाम फ्राइट बोल लो उसको, या भाई मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन बोल लो उसको, कि भाई जैसे ही वो एकदम मोमेंट आता है, तो लाइक इवन दो यू हैव द इंफॉर्मेशन जो कि 10 मिनट बाद या पेपर के बाद इमीडिएटली आपको याद आ जाएगी, बट लाइक जैसे ही क्वेश्चन देखते हो तो देन यू ब्लैंक एट दैट मोमेंट। सो हाउ कैन लाइक समबडी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डिड यू फेस समथिंग लाइक दिस, एंड लाइक हाउ कैन समबडी ओवरकम इट? Sir, I think there are 2 points that I want to make in this case. हम्म, That most of time I have also experienced that my friends are facing such kind of problem. हम्म, So that is because that sometimes after seeing many questions that they are not able to attempt, they start panicking, and हम्म, even the question that they know they have read, they start uh, uh, making the wrong attempts. हम्म, So I think we should not panic while seeing the question paper. If we don't know 4 or 5 questions in sequence, it doesn't matter. We can do another question because all have the same marks. So first, we should not do panic. हम्म, Second thing is that while reading your notes, while हम्म, reading your book, we should हम्म, always have the mindsets of examiner. Like हम्म, I am reading a paragraph, so what question can be made from this paragraph? In prelims or in हम्म, mains for that matter. So that will when you will see the question in the question paper, you will not see something new. You will see that okay, I knew that such kind of question can come because हम्म, I read that paragraph. So I think that can help. okay. So like I think we've picked your brain enough about prelims ka preparation, and let's move on to the next stage, क्योंकि मतलब you were somebody who cleared prelims with a margin both times, right? Yes, So yes. how much of your mains ka preparation did you do before prelims itself? So in my first mains, the flow that I had with my mains preparation in my first attempt was that I gave too much focus on prelims. Like Hmm. I mentioned, I gave 100 tests. Because it was the first attempt. So there was always a kind of feeling that it is the first attempt. We should at least clear prelims. That Hmm. kind of feeling is there. But in that first attempt, uh, I realized that my notes for mains was not prepared. Hmm. Many of the topics like disaster management, governance, I didn't did very holistically. Hmm. So while writing the mains paper in that year, I faced problems. Hmm. Uh, in my second attempt, I rectified that problem. I made specific notes for every single keyword written in the main syllabus Hmm. and keep them updated with the current affairs. Also referring to the toppers' notes, Hmm. and uh, and from that I made very good notes for mains Hmm. in my second attempt, which was not there in the first attempt. I think that improved my marks in mains also a lot. So in 2022 का mains, you were also part of our mains focus group. तो Yes, yes. वहां पे आपको क्या फीडबैक मिला, या मतलब डिड इट हेल्प यू एट ऑल, और लाइक मतलब व्हाट इज योर ओवरऑल assessment of the mains focus group in 2022? So in my And first please be mains, absolutely honest, मतलब okay. positive, negative, whatever it is that you think about it, it would also help us improve the program. So please be absolutely honest. So in my first mains, I gave one test series in a well-known coaching institute. In my second mains, I gave two test series from UPSC Prep first and second in another coaching institute. Hmm. The difference was that I gave this time more diversified test papers Hmm. than in my first attempt. I think that helped me a lot because the question I was solving in UPSC Prep question papers was very diversified because I didn't read the source from the question paper was coming. So Hmm. it prepared me to answer those questions that I don't know. Hmm. And in mains also such question come. Like in GS3, there were many questions that I completely have no idea, but I Yeah. attempted it and I scored really well in GS3.
So I think that prepared me while solving the papers in UPSC prep and other diversified test papers. And other thing I would mention that the UPSC prep, the main focus could really help me because they provided facts of different topics, which is very important while writing answers because they give extra marks, as well as they provided good current affairs like links of different important current affairs. So that really helped me in covering updating my notes because we have to update our notes with the current affairs. So I believe that my experience of mains focus group was very good. And if I have to just give a number that in my uh, GS papers this time I scored 451 Hmm. in all the GS paper. It was 100 That marks is improvement, 100 mark improvement from my last. 451, man. 451 is a absolutely impressive score in general studies क्योंकि मतलब दिस इज फॉर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीपल वाचिंग कि जीएस के 4 पेपर में माने कि जीएस 1 2 3 4 में अगर आपका टोटल 400 के आसपास है तो दैट इज अ गुड स्कोर. मतलब जनरली यू विल सी कि मोस्ट टॉपर्स हैव 400 410 400 मतलब जो टॉप पे जा रहे होते हैं 100 रैंक्स में आ रहे होते हैं वो 420 पे आ जाते हैं. तो योगेश having 451 is like a massive thing कि he has jumped up high and then he basically fucked up somewhere else जिसके कारण मतलब उनकी रैंक थोड़ी पीछे हो गई. अगर वहां पे भी 5 7 नंबर और हो जाते तो he might have been in top 100. Yes, sir. तो कीपिंग दैट इन माइंड योगेश जो नोट्स की आप काफी बात कर रहे हो अभी तो why is it important for somebody giving mains to have notes? So I believe that in mains, the main game is that you have to reproduce what you have learned Hmm. in that 8 to 10 minutes time period. If you are reading from book, then you will face difficulty in reproducing that content in that time period. Hmm. But if you have made notes, specific notes for every keyword with your handwriting, with uh, your own style, I Hmm. think that really helped me to write those answers in that time period. I think that that is the importance of the notes. Hmm. Apart from this, I believe that note making is important because you have to update it regular time, and the more you update it and give the recent examples, recent case studies, Hmm. uh, you can also make diagrams in your notes, your pie charts, graph. I use a lot of graphs in my GS3. Hmm. So I think such kind of practice in your notes really help you in the main papers, like in the UPSC papers. And how does one go about making good notes for mains? कि मतलब बेसिक चीज तो आपने बताया कि भैया फैक्ट्स होना चाहिए कुछ एक डायग्राम आपने जो पहले प्रैक्टिस करी हुई है बट नाउ दैट मेंस का सिलेबस इज सो एक्सटेंसिव how can somebody make good notes? How what is the process that you followed? And कि ये जो notes को compile आप करते हो overall तो मतलब what was the size of your notes for mains 2022 कि भाई कितने पेजेस के नोट्स थे आपके पास ओवरऑल? अप्रोक्सीमेट भी चलेगा, एग्जैक्ट आइडिया अगर अपने को नहीं है तो. Sir, my strategy of making notes was like that. I used to read from book one or two times. Like I have to make notes for art and culture. So I have two sources, fine arts book and Nitin Singhania book. So Hmm. I will read the topic twice, thrice, and I will have that kind of like what are the important topics, what are the Hmm. important content in that book. Hmm. And also I will have a look at the previous year question papers. So what kind of questions UPSC is asking, Hmm. and based upon that I will make notes topic wise: architecture, painting, dance, music, Hmm. etc. And I will make the notes in point format because ultimately we have to write answers in point format. So I will make notes in that. I will add diagrams in notes Hmm. from the book only. So that helped me in making notes. Hmm. And sir, like sources for society, governance, internal security, there is no particular book like we Hmm. have in the case of art and culture. So Hmm. in that case, I used internet a lot. Like I use Google a lot, like effects of globalization on Hmm. Indian society. Hmm. उसमें मैंने कई सारे पेजेस पढ़े. उसमें Hmm. फिर मैंने एनालाइज किया कि हम किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं कि ओल्ड एज पे क्या इफेक्ट होगा, यंग पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट होगा ग्लोबलाइजेशन का, Hmm. विमेन पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव्स देखे मैंने. Hmm. तो गूगल का भी काफ़ी यूज़ किया डिफरेंट टॉपिक्स के लिए. Hmm. तो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए. बट नोट्स मेरे थे कि हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ मैंने लिखा. Hmm. हर टॉपिक पे मैंने कुछ ना कुछ नोट्स बनाए 4-5 पन्नों पे. तो Hmm. वो रियली हेल्प मी. एंड सर, माय द वॉल्यूम ऑफ माय नोट्स
like I mentioned before that I have made notes for every topic, Hmm. every single word. So some of the notes were also in digital format, Hmm. and some of was in the Handwritten. of handwritten. So volume was काफी मोटे थे, बट द इशू इज दैट मैंने खुद बनाए थे तो मुझे रिवीजन में आसानी थी कि मैं रिवाइज कर आसानी से कर पा रहा था। Hmm. तो वो धीरे धीरे टाइम पीरियड कम होता चला गया, और मेन से पहले मैंने 2-3 बार रिवाइज किए अपने सारे नोट्स, तो मैं वेल प्रिपेयर्ड था आंसर लिखने के लिए, मैं रिकॉल आसानी से कर पा रहा था। Hmm. तो यही था मेरे नोट्स के बारे में। So approximately, if we have to get a rough number, can I say that you had 100 pages for each GS का subject, यस or सर। was it less or was it more? सर एवरेज 100 होंगे, Hmm. 110 120 100 में। Right. So like that is the point that I sometimes make to a lot of people, और मतलब किसी कारण वो नहीं समझ पाते या किसी कारण वो रश में रहते हैं कि भाई अरे 3 ही महीने हैं, नोट्स कब बनाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन ट्राइंग टू मेक मेंस का नोट्स राइट नाउ, कि अगर कोई मेंस 23 की तैयारी कर रहा है, प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, तो क्या उन्हें अभी इस मोमेंट पे नोट्स बनाने चाहिए? Sir, I believe that in my first mains, I made some notes, but not for all the topic. हम्म, But in my second mains, I made notes during this phase only, between pre and mains. So हम्म, those topics that I was not prepared very well, so I made notes in this period only. हम्म, And I believe that it may take some time, but the thing is that it will give you a lot of benefit later, because then you can revise it easily and you can reproduce it in the mains paper. So you don't have to make notes for everything, because if you are giving it the first time mains, then हम्म, it may be possible. But I have given 2 times mains, and my first mains was in January हम्म, in 2022, 21। and 22 January, ओके, सॉरी। हम्म, and then second mains in September. So हम्म। there was very less period, so I can continue with the same notes and addition, and doing addition with the हम्म। topic that I was not well prepared. तो So that अब was जैसे the एक ये भी चीज है इसमें, दैट अ लॉट ऑफ पीपल की फीलिंग कि मेंस का नोट्स को सिग्निफिकेंटली हमें अपडेट करना पड़ता है एवरी ईयर। व्हाट yes, इज sir. योर ओपिनियन ऑन इट? Sir, I believe that significantly is not required. However, we have to update as per the current affairs, as per the data facts that we are finding in the new one in the newspaper. The basic content remains the same, whether it is society, whether it is governance, या environment. Uh, so we have to also focus on the current affairs, and we have to update current affairs accordingly. So significantly is not significantly change is not requirement, but definitely amendment required regarding current affairs and the new facts that you are witnessing in the newspaper. राइट। सो ऑन दैट, कि जैसे अब करंट अफेयर्स में मतलब आई ऑलवेज टेंड टू थिंक ऑफ इट इन 80-20, कि 80% आपका काम स्टैटिक ही रहता है मेंस में। मतलब Yes, yes. कि आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के नोट बना लिए एक बारी, तो अब मतलब उसमें बहुत ज्यादा अपडेशन का रिक्वायर्ड नहीं है। Mhm. राइट। Yes, yes. सिमिलरली आपने एग्रीकल्चर का बेसिक एक बार नोट्स बना लिए कि भैया व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स, कौन से एरिया में क्या चल रहा है, मतलब एमएसपी किस पे मिलती है, एमएसपी की प्रॉब्लम्स क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कैसे है, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस सिस्टम बन गए। Yes, sir. तो अब बस फिर वही है कि भाई अब अगर पिछले 1 साल 2 साल में कुछ नया इवेंट हुआ है इधर, कि भाई या तो अब लाइक प्रधानमंत्री हमारे आके बोलते हैं दैट डबल फार्मर्स इनकम में क्या क्या चीज नहीं कर रहे हैं, तो देन दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, वो आप नोट्स में डाल लो। Yes, बट sir. अब ये ना कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रॉब्लम्स तो 25 साल से वही है, तो भाई Yes, sir. मतलब कोई बहुत ज्यादा अपडेट होगा नहीं वहां पे। हाँ जी सर। एंड कमिंग टू इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो योगेश, हाउ मच डिड यू स्कोर इन द इंटरव्यू एंड व्हाट वाज योर प्रेप स्ट्रेटजी देयर? So my score in interview was 173, and sir, so my strategy for preparing interviews was that I was well prepared with my DEF. All the contents, all the important areas of my DEF was well prepared. However, my interview was not on DEF, so it was very random. But it gave me a sense of completion while I was going into the hall. I have well prepared, so that confidence I think helped me in the interview. That I was prepared with DEF and all the boxes were ticked. And sir, apart from the interview, apart from the DAF preparation, I would say that I practiced a lot of offline discussions. Like I had a group of friends in my locality. They were also giving interview, so we used to have offline discussions on different current affairs topic, and hopefully few topics were actually asked in the in my actual interview.
So that really helped me. And apart from this, uh, speaking a lot while reading newspaper Hmm. really helped me, because till mains we were only reading and writing, we were not speaking much. Hmm. In interview you have to speak, so doing practice of speaking, whether it is in front of your friends or uh, while reading newspaper you can speak. So that helped me. And apart from I prepared DEF really well. Right. So I think your prep strategy overall, so far as I see it, is कि आप ओवरवर्क करके अपने आप को एक वो अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट गार्ड कर लेते हो Yes sir. कि भाई हमसे जितना एफर्ट हो सकता था वी हैव गॉन 110%. Like that is what you did for prelims by giving 100 test, 40 test. That is what you did for mains with extra tests, like with preparing your notes, and that is similar to what you also did with interview. So can I sum up your preparation strategy in this sense कि भाई हमसे जितना हो सकता है हम 110% दे देंगे, बाकी Yes अब sir. जो होगा देखा जाएगा. ये सर ऐसा ही हुआ था मेरे साथ मेंस में भी, कि इस बार मुझे ऐसे में थोड़े कम मार्क्स मिले। हम्म. जबकि जब मैंने पहला ऐसे लिखा था अपना मेंस में 2021 वाला ऐसे, उसमें मुझे लगा कि मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट उसमें मार्क्स ज़्यादा मिले मेरे को हम्म. एज कम्पेयर टू जो अब मैंने लिखा ऐसे 2022 वाले अटेम्प्ट में। हम्म. तो सर यूपीएससी में कुछ भी सर्टेन नहीं है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये भी सर्टेन नहीं है कि आपने, मान लो आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बट कई बार शायद एग्जामिनर को वो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आया मेरा ऐसे में, तो वहाँ मार्क्स कम मिले। बट कोशिश यही रहनी चाहिए कि अपने तरीके से अपना बेस्ट अटेम्प्ट दो, अपने हम्म. तरीके से सारे जो भी आप अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हो वो करो। बाकी काफ़ी कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है, अनसर्टेन होता है इस जर्नी के अंदर। तो बस यही है कि अपने तरीके से बेस्ट दो। So which brings me to a very controversial question कि how much do you think luck contributes in this entire process? कि मतलब चांस का किधर फैक्टर रहता है कौन से पार्ट ऑफ द एग्जाम में एंड लाइक हाउ लकी डू यू थिंक यू वर? So I think luck do play a role in all the three stages. I will definitely say that, because in prelims, as I have mentioned that nowadays prelims are becoming more random. The scope has increased. So sometimes luck plays a role, and in mains also sometimes, like I mentioned that in my essay, I thought I would get more marks, but I didn't get enough marks in essay this time. So I believe that maybe my point of view was not conveyed to the examiner well. So maybe that would be a luck factor. In interview also, sir, I would mention that luck plays an important role, because it also depend upon the mood of the examiner, the chairman, how he's feeling, how तो she's feeling. दैट तो So इंटरव्यू में तो एब्सोल्यूट है कि लाइक उस yes, दिन sir. भैया मूड खराब है और लाइक Yes, आपका खराब हो सकता sir. है. Sir, the first question they asked me, it was हम्म. very random. They asked me that uh, uh, name two or three things which you disagree with Mahatma Gandhi's philosophy. So they just asked me the first question this, हम्म. and I was a bit shocked that like they didn't ask me anything. Just start with me this question. हम्म. So I tried to think and I gave a decent answer. So I would say that it is very in interview also luck factor plays an important role. What kind of question they ask, हम्म. because it also depend upon their own uh, mood, their own मतलब माइंड daily सेट फ्रेम life. ऑफ Yes, sir. रेफरेंस कि भाई आज Yes, न्यूज़पेपर में sir. कुछ देख लिया तो भाई वो अटक गया आप दिमाग में तो पूछ लिया सवाल. Yes, sir. तो सर लक फैक्टर तो तीनों स्टेज में है। है. तो हाउ लकी डू यू थिंक यू वर इन लाइक एनी गिवन स्टेज? जैसे प्रीलिम्स में आई वुड नॉट कंसिडर कि यू वर लाइक लक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू, क्योंकि वहां पे तुम मार्जिन से क्लियर कर रहे थे कि भाई अगर कट ऑफ यस गया सर। था लास्ट ईयर का 92 आई थिंक, नहीं 88 कट ऑफ गया था यस एंड सर। यू वर स्कोरिंग 110 फ्रॉम कीज, सो दैट मीन्स कि मतलब वहां पे लक वाला फैक्टर इतना ज्यादा तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं था. हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक दैट लक वाज फॉर यू इन मेंस एंड इंटरव्यू? सर इन मेंस के अंदर मैं मानूंगा कि जीएस की मैंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करी थी, तो उसका मुझे रिजल्ट मिला। तो मेंस के अंदर भी बस ऐसे में मुझे लगा कि मैं शायद मुझे थोड़ा सा नंबर कम मिले एज कम्पेयर टू माई एफर्ट्स। हाउएवर सर इन इंटरव्यू में मानता हूँ कि लक ने काफ़ी रोल प्ले किया, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू डेट आया था वो 21 अप्रैल को आया था, काफ़ी बाद में आया था, तो मुझे काफ़ी सारा टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए। इंटरव्यू मैंने काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यू दिए, अपना आपको वेल ग्रूम किया उस एनवायरनमेंट के लिए। हाउ तो मेनी डिड यू गिव?
सर मैंने 9 से 10 मॉक इंटरव्यू दिए, 9 क्या 10। क्या देने चाहिए इतने मॉक इंटरव्यूज? सर एक्चुअली मेरा ये पहला इंटरव्यू था, मतलब लाइफ का पहला इंटरव्यू था, कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तो वो एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे लगा कि शायद थोड़े बहुत एक्स्ट्रा दूंगा तो शायद मैं वो एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब कर पाऊँ। और फिर मुझे लगा कि वो मुझे हेल्प करा जब मैं उस हॉल में एंटर किया यूपीएससी भवन में। तो मैं अपने आप को संभाल पा रहा था, जो एनजाइटी होती है, जो नर्वसनेस होती है। तो आई थिंक सर जो फर्स्ट अटेम्प्टर है, जो पहली बार इंटरव्यू देने वाले हैं, आई थिंक अगर वो एक दो मॉक इंटरव्यू एक्स्ट्रा देते हैं तो आई थिंक वो इतना नुकसान नहीं है। बट ये है कि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है मॉक इंटरव्यू से, ना कि उनकी बातों को लिटरली लेना है। आपको बस देखना है कि हाँ मैं 5 लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, अपनी बातें रख पा रहा हूँ, अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको कन्वे कर पा रहा हूँ, वो आपको देखना है। Great. So, which brings me to another major point, which I think is often a point of contention. कि मेंस में जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे होते हो तो ऑब्वियसली यू गेव अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज, यू गेव इट फ्रॉम लाइक 2 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. तो हाउ सीरियसली शुड somebody take the feedback that they are given in a mains test series? So in mains test series also there is uncertainty, because many of the comments given by the examiner, the checker is different. But if you are repeating the same mistakes again and again in different paper, then you must give importance to their remarks. Like if you are not uh, underlining the important keywords and every checker is saying it, so you must give importance to it. However, the writing style is different for every person. Some have different writing style. So if someone is commenting on your writing style, like you write, your handwriting is not very good, not very legible. So if it is repeating, the remark is repeating, then it is important. But one-off comment should not completely change your writing style. That is the main point. एंड आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद यू देयर बिकॉज मतलब बहुत बार यही होता है कि मतलब जैसे मैं बचपन से मानता था कि मेरी राइटिंग ठीक है. मतलब खुद खुद के दिल में तो मेरा यही होता था कि भाई अच्छी है मेरी राइटिंग. बट अब लाइक कहीं ना कहीं कोई एक एग्जामिनर आ जाएगा, वो बोलेगा कि लाइक ये तुम्हारी राइटिंग ना समझ नहीं आ रही है. तो अब वही है कि लाइक इन अ वर्ल्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी दैट आई हैव गुड राइटिंग एंड दैट 1% टेलिंग मी आई हैव बैड राइटिंग, तो आई शुड पे मोर क्रीडेंस टू द majority ओपिनियन रादर देन लाइक एक वो रैंडम ओपिनियन आ गया. एंड उसके लिए आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी इन जनरल टू गिव अ लॉट मोर टेस्ट्स. तो मेंस की तैयारी के लिए व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी टेस्ट शुड समबडी गिव? क्योंकि एक ये जनरल जो क्वेश्चन हमेशा बनता है, बी इट फॉर प्रीलिम्स, बी इट फॉर मेंस, बी इट फॉर लाइक इंटरव्यू, के भाई कितने टेस्ट दे या कितने मॉक इंटरव्यू दे या कितने फुल टेस्ट एमसीक्यू वाले दे. तो हाउ मेनी मेंस का टेस्ट डू यू थिंक somebody should give? So in my first mains, I gave around 20-25 Hmm. tests. And sir, the major problem that I was facing in my first mains was that I was not able to complete the paper, Hmm. and that is why I left many questions in the actual exam also. Hmm. So in my second attempt, my focus was that not only I have to write good content, I have to finish the whole paper. Hmm. So for that, I gave much more tests. So Hmm. around 35 tests I have given for second attempt. So I think giving more tests and focusing on completing the paper with good content really helped me. 35 टेस्ट इन 3 months, माने कि मतलब हफ्ते में 2 टेस्ट आप दे ही रहते हैं. Yes, sir. Sir, including optional essay and all the GS papers. So that was my strategy because I wanted to complete my whole paper. So जितनी बार मैं टेस्ट दिया, पहली बारी में नहीं हुआ, अगली बारी में थोड़ा और इम्प्रूव किया, तो उस तरीके से जितने टेस्ट लिखा मैं, उतना राइटिंग का जो प्रैक्टिस अच्छा हुआ मेरा. इसके अलावा मैं डेली भी आंसर लिखता था टॉपर्स की कॉपीज देखकर, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे हेल्प किया कुछ नए पॉइंट्स मिलने में, कुछ नया डायग्राम मिलने में. उसको फिर मैं अपने टेस्ट पेपर में इसको प्रैक्टिस करता था. राइट. तो आई थिंक कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज कि योगेश, आपका ऑप्शनल क्या था एंड आपका ऑप्शनल में 2021 के मेंस में और 2022 के मेंस में क्या परफॉर्मेंस रहा था? So my optional is political science and international relations. In my first mains, my first paper was uh, in both the paper I left few questions. Hmm. In my first mains I scored 239 in my first Both attempt. papers In PSI. second, yes sir. In second attempt, only marginal increase was there. It was 252 this time. Hmm. सो उतना इंक्रीज नहीं हुआ, ऑल्दो मैंने एफर्ट्स तो काफ़ी डाले. आई Hmm. थिंक क्योंकि ना पीएसआई का क्या है कि आपका राइटिंग स्टाइल काफ़ी यूनिक है, Hmm. होना चाहिए, मतलब कि जो कि लैंग्वेज डिमांड कर रहा है.
आईआर के अंदर आपको जो स्पेसिफिक राइटिंग स्टाइल डेवलप करना पड़ता है उसको काफ़ी टाइम लगता है। तो आई थिंक मेरा शायद वो उतना डेवलप नहीं हो पाया बाय द टाइम, तो उस वजह से थोड़े मार्क्स कम मिले। बट मैं ये कहूँगा कि टेस्ट सीरीज देने से काफ़ी हेल्प तो मिली मेरे को, बिकॉज क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है पीएसआईआर का। तो तो पीएसआईआर की टेस्ट सीरीज आपने कहाँ पे दी थी? मैंने शुभ्रा मैम वहाँ से क्रैश कोर्स लिया था, तो वहीं पर मैंने 8 टेस्ट लगाए थे पीएसआर के। तो वहाँ से मुझे कुछ जो करंट अफेयर के बेसिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कवर हुए, तो उसकी मुझे हेल्प मिली। So, hello folks. The interview with Yogesh Saini had to be cut short because of internet issues at his end, where he could not, join anymore. We'll try and finish it if we get internet connectivity in the next couple of hours. But if not, this might be what you are seeing. So, most of the conversation that we had with Yogesh was pretty well recorded, and that is the episode that you would have seen today. So, if you're preparing for UPSC in 2024, if you're giving mains 23, best of luck on your UPSC journey.